got this opportunity to host the webinar on cybersecurity and job opportunities. I would like to welcome today's experts, Mr. Alok G. Tripathi, CEO of Secure IT Works Private Limited, and Mr. Amit Verma, Senior Career Counselor at Secure IT Works Private Limited. Now, without wasting a moment, I would like to introduce our speaker. Introducing Amit Verma sir is itself a matter of proud. He is one of the alumni of our college. He is the pass out from 2014 batch from EC branch. He is the senior counselor at Secure IT Works Private Limited with more than 7 years of experience in public speaking, career guidance, and have given many speeches as a motivational speaker. Over to you, sir. Thank you so much, Varuna, for the warm welcome. Yeah, good morning, all of you. My name is Amit Verma, and I am also your senior. I am pass out 2014 batch with SIRT. So I know जब हम अपने किसी भी सीनियर से इंट्रोड्यूस होते हैं कॉलेज के अंदर, सो मुझे पता है कि थोड़ा सा हेजिटेशन हमारे अंदर होता है, बट मैं वैसा सीनियर बिल्कुल भी नहीं हूँ जो आपको थोड़ी देर में बोर करने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से कि आज का सेशन आपके करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जितने भी लोग इस कॉल पे कनेक्ट हैं, मैं आपके फेसेस भी देखना चाहूंगा, तो अगर आप अपने कैमरे ऑन करेंगे तो थोड़ा सा ये सेशन और ज्यादा हम बेटर बना पाएंगे। बिकॉज ये जो सेशन है ये सिर्फ एक सेमिनार नहीं है, आपके करियर में ग्रोथ के लिए आगे फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज आज अवेलेबल है मार्केट में, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आप सभी लोग लकी हैं कि इस सेशन को जो होस्ट कभी करने वाले हैं थोड़ी देर में, वो ऑलरेडी एक कंपनी के सीईओ हैं, एमडी हैं और 20+ ईयर्स उन एक्सपीरियंस है। सो जैसे ही मैं सर को यहाँ पर वेलकम करूं, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग अपने कैमरे ऑन करें। बिकॉज कैसा लगेगा अगर मैं बोलता रहूंगा और कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट आप सभी लोग अपने कैमरे ऑन करें ताकि प्रॉपर मैनर में हम इस सेशन को आगे कंटिन्यू कर पाए। राइट, आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मिल गई हैं बिकॉज हम वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। व्हेन आई एम इन कॉलेज इन 2014 2013 12, that time these type of facility is not available. So you are so lucky because जब हमें कोई वेबिनार अटेंड करना होता था, सॉरी सेमिनार हमें अटेंड करना होता था दैट टाइम, तो हम सभी लोगों को एक ऑडिटोरियम में गैदर होना पड़ता था। देन अभी आप में से कुछ लोग हैं जो अपने आई थिंक घर से इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, कुछ कॉलेज ड्रेस में मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों को, और कॉलेज ड्रेस में आपको देखकर मुझे मेरी भी थोड़ी सी यादें ताजा हो गई है। तो अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को देखकर। एंड SIRT जो ग्रुप है, वहाँ के स्टूडेंट थोड़े ज्यादा सीरियस होते हैं, मुझे पता है बिकॉज मैं उसी कॉलेज से पास आउट हूँ। सो आप सभी के फेस पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है आप सभी लोगों से कि थोड़ा सा फेस पर अगर आप स्माइल बना के रखेंगे ना, तो हम इस सेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सीरियसली मत बैठिए कि अरे यार अंजना मैम ने फिर से बुला लिया है एक वेबिनार अटेंड करने के लिए, एक स्पीकर आएंगे फिर से हमको बोर कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। मेरा प्रॉमिस है आप सभी लोगों से। बिकॉज जब हम कॉलेज में होते हैं, खासकर हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो हमारे मन में फर्स्ट ईयर से एक डाउट होता है कि यार जब मैं फाइनल ईयर में आऊंगा तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर यार मेरा करियर में मैं कितनी अर्निंग करूंगा, कौन मेरा करियर आगे ग्रोथ मेरी कैसे होने वाली है। सो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, बिकॉज आज का जो वेबिनार है, इसका जो टॉपिक है या फिर इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, 100% इसमें श्योरिटी है कि आपके करियर में बहुत ज्यादा हाइक आपको मिल सकता है। जो भी प्लानिंग्स आपने अपने करियर में की हुई हैं, जो डाउट्स अभी भी चल रहे हैं कि यार मैं थर्ड ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, आगे मेरी करियर में क्या होने वाला है, मैं कौन सी कंपनी में प्लेस्ड होगा, या फिर मेरी सैलरी कितनी होगी, बहुत सारे डाउट्स आपके अभी क्लियर होने वाले हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से जिन्होंने अभी भी अपना कैमरा ऑफ करके रखा हुआ है, फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और थ्रू आउट द सेशन बहुत लेंदी नहीं है, हार्डली 1 आवर 15 मिनट का ये सेशन रहेगा। बट इस सेशन में मैं, बिकॉज हम सभी लोग अपने अपने आइदर लैपटॉप से आइदर मोबाइल फोन से कनेक्ट हैं, मैं सभी लोगों को ऑब्जर्व करूंगा इस सेशन में। और इस सेशन में से उन पांच लोगों को जो बहुत ज्यादा सीरियस वे में सिंसियरिटी के साथ में सेशन को अटेंड करेंगे, एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन 5 लोगों के नाम हम सिलेक्ट करेंगे और उनके लिए कुछ सरप्राइजेस हो सकता है हमारे साइड से। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर मैनर में अपने कैमरे ऑन रखिए, बार बार लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। इंग्लिश का एक कोट है,
आपने शायद सुना भी होगा, अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस, इफ यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज इट, इट विल नेवर कम अगेन. सो आई रिक्वेस्ट, कैमरे हम ऑन रखेंगे, सारी चीजों को ध्यान से सुनेंगे. अगर एक कॉपी और पेन आपके पास में हो तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्लीज उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे साथ में आलोक सर कनेक्ट हो चुके हैं. सो वरुणा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर का वेलकम करें, देन हम सेशन स्टार्ट करते हैं. यस. Yes, sir. As we know, we have the CEO with us today. So I would like to introduce the He is highly skilled cybersecurity professional, serial entrepreneur, mentor, and business coach. He has more than 20 years of industry and corporate experience. He is one of the youngest cyber ethical hackers in India at the age of 16. One of the youngest author at the age of 18. It was our great pleasure to have Alok sir with us. Most welcome, sir. Thank you so much, Varuna. I hope I'm audible. Yes, sir, you are audible. Yes, sir, audible. Thank you so much. Firstly, I want to thank Dr. Vikas, Kalpana ma'am, Anjana ma'am, and Professor Nitya for arranging this webinar and giving us opportunity to come and introduce ourselves here. And thank you so much for all of us. Very good morning. I hope that as Amit has started the discussion, we do not have this another boring session of career counseling or career motivation and stuff like that, right? So I'll just take where Varuna started, right? As she introduced my profile as one of the youngest ethical hackers, right? It's definitely not at this point in time when I'm talking about 1999, right? So I think being computer science or IT engineers and domain students, you know that the internet was introduced in 1993, correct? And I was one of the few guys who could break it into the internet and cybersecurity, started cybersecurity practices in 1999. And that time, my age was 16. So I have been recognized as one of the youngest ethical hackers in India at the age of 16. Talking about furthering the process, I ended up becoming one of the youngest authors in India. I have written on information security and ethical hacking books in India at the age of 18. The book was recommended as a syllabus book for BSc IT students for 6th sem from between 2001 to 2004 by Mumbai University. And so on, as Varuna said, I possess approximately 20 plus years of experience into cybersecurity. Okay. Talking about companies, talking about the influence that we have in market. So being into cybersecurity expert, I have served companies like PwC, Grant Thornton, Reliance, Bharti Airtel, NetMagic, those companies in very serious roles in terms of management as well as cybersecurity. So now this term is coming a lot of times like cybersecurity, right? And I'm sure that most of us are really aware of this fact that cybersecurity is something which is nowadays has created a lot of boom across the country and internationally as well. But जब हम बात करते, I think let's keep this conversation kind of Hindi and English, right? So when we talk about cybersecurity, हमने अभी जिस समय COVID start हुआ, we have identified and we have started using this term very frequently, but it is not something which is very new in the industry. Okay, cybersecurity has always been there for almost 5-6 decades now. Okay, so जब हम बात करते हैं cybersecurity की, तो it started with way back somewhere in 1960s, 70s when the computer system started evaluating. Okay, so the overall objective of secure IT, why we started this, why we have came up with this, and why, fortunately, unfortunately, we are eating up your time here. So we wanted to, just give you a glimpse of what cybersecurity is, where we are going, and where exactly do we stand and what we are doing as company altogether to ensure that cybersecurity is kept into
into the right pace it requires. Okay, so I'll start with discussing about cybersecurity first. Then we'll move on to what we do as per Secure IT as a company, and then we'll move on to why we are actually investing our time today to understand this entire concept. Okay, so first thing is what is cybersecurity? See, cybersecurity, I'm sure that you are taught by your very valuable professors and mentors in the college that cybersecurity tries to answer three basic things. Okay, or cybersecurity tries to protect three basic pillars of the company: people, process, technology. Okay, so when you talk about any organization, let's say, for example, the classic example of your college itself, right? So your institution, or for that matter, any institution that we see across, is built of three things. One is people who work for them. Like, for example, in colleges, your professors, directors, these college staff, right? So, and students, of course. So we are people, correct? So cybersecurity tries to protect or tries to defend people from getting hacked. Okay. Then comes the technology. People use technology for doing their day-to-day operation and tries to ease down their lives, right? So we use technology across ourselves. Like, for example, Zoom that we are connected to. Like, for example, mobile applications, mobiles, tablets that we use. So these all comes into technology aspects. The cybersecurity tries to protect and defend technology against any kind of malicious attempt. Okay. Next is the process. What is the process? See, process is something we can say that a mechanism of doing something step by step. Okay, in a sequential manner. So, it can be defined or undefined. It can be documented, undocumented. जैसे हमारी day-to-day operations में हम क्या करते हैं? We get up in the morning, we get a freshen up, we take shower, we take our breakfast, we get ready, we go to college, right? We attend the lectures, we come back from the college to home, we go get engaged into other activities, right? So this is kind of a process which is undocumented, but still we follow it. Similarly, every organization has the process which drives the entire organization, talking about people, process, technology. Okay. So cybersecurity kya karta hai? Cybersecurity tries and builds a mechanism for organizations in order to protect the PPT. So we call people, process, technology as PPTs. Okay. So these are three basic pillars of any organization. Now, the most important question that comes is Q. Why? Why we want to protect it? So as right in front of your eyes, you can see that a couple of statistics being mentioned there, right? So why is cybersecurity? Is because as per 2022, the global damage among the entire world was $16.4 billion. Okay. So मतलब एक दिन में जो पूरे वर्ल्ड को जो लॉस होता है because of cyber crime activities, it is something which corresponds to $16.4 billion. When we talk about this amount, this is something which is reported, right? We all know there are highly chances in case of cybercrime that people do not report it, is because when there's a cybercrime, जब कभी कोई company hack होती है, cybercrime incident होता है किसी company के ऊपर, so mostly they don't report it because that is connected with the reputation. कोई company का अगर data loss होता है या cybercrime होता है, तो company उसको reputation पे देखती है और they don't report it. So this is what is the reported data of $16.4 billion, right? And that's huge. If you talk about ransomware, जो आपने पढ़ा भी होगा, आपके curriculum में भी होगा, ransomware itself, which is one sort of malware और एक तरह का virus है जो सिर्फ उस malware से जो protected damage by 2024, it is going to be $21 billion. एक छोटे से malware से जो average reported circumstances, that is something $21 billion approximately. 16% of the organizations worldwide. अब ये Cisco के और ये जो statistics आपने देख रहे हैं आपके सामने, it is not from us, it is not from Secure IT. The statistics come from very reputed sources like Cybercrime Magazine, PwC, NASSCOM, and all those organizations that we're talking about. Okay, so this is not our data. This is something which is publicly available on the Google and the respective domains.
by Cisco. Cisco is one of the largest network equipment and appliance manufacturers. सिस्को ने जो रिपोर्ट रिवील किए हैं उसके हिसाब से 16% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से 16% ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको डेली बेसिस पे 1 लाख से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स मॉनिटर होते हैं। मतलब साइबर सिक्योरिटी जो हैकर्स है वो 16% ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर 1 लाख से ज्यादा अटैक डेली बेसिस पे करते हैं। ओके, सो the reason why we are talking about cybersecurity is this is something which companies have realized that with the advanced usage of technology, with more adoption of technology into day-to-day operation, it is becoming essential to protect the technology and assets for us. ठीक है, अब हम जब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स, सो हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट आती है जब हमें किसी चीज को डिफेंड करना होगा, वो आती है रिसोर्सेस की, राइट? ठीक है, हमें कुछ प्रोटेक्ट करना है, हमें कुछ डिफेंड करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, राइट? बट ट्रेनिंग देने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टू हैव द रिसोर्सेज टू ट्रेन पीपल, राइट? सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट समथिंग, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी टू हैव द रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट इट। एंड व्हाट आर दोस रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज in cyber security domain, it's not tool, it is not technology, it's people. Okay, we always require capable, competent and skillful resources in cyber security. Okay, now if I it's just because it's a webinar and asking question and getting response may be chaotic, I'll just give you a fair understanding of what and why we are talking about. Okay, सी हमारे आसपास की अगर हम बात करें, अगर आप अपने कॉलेज में और अपने कलीग्स की बात करें, सो आई थिंक आपके आसपास या आपके जो कलीग्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें से 60 to 65% स्टूडेंट्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, PHP, सेल्स, मार्केटिंग, इन सारे डोमेन्स में अपने आप को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। नो ऑफेंस, दिस ऑल आर वेरी गुड फील्ड्स, नो ऑफेंस टू इट। डेटा साइंस इज फैंटास्टिक, डेटा एनालिटिक्स ऑसम, बिजनेस एनालिटिक्स फैंटास्टिक। सी प्रॉब्लम व्हाट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज देयर आर 60 to 65 lakh students getting passed out every year in India, right? Despite you talk about any field specifically, it does not have capacity and capability to incorporate those 60-65 lakhs of students. When we talk about 50-55% of people who are entering into software development business and stuff, despite being a fantastic career option, we do not have 30-35 lakhs vacancies for AI/ML or business analytics, data science and all this stuff. Okay. Resulting is there's a huge competition in the market due to low vacancies, huge task force available for getting those placements, resulting in lower salary and lower placement options. And we are witness hamare India mein being so many states and stuff, we are encountering some of the other election happening in India, right? Every now and then. And the biggest problem or biggest thing is that has been raised every now and then is unemployment, correct? Now, the point which we are trying to address is, so as per Secure IT, I'll just brief you what Secure IT is. Secure IT is into certification, solutions and certification business, okay? So we have services which talks about which is about giving cybersecurity services to clients, like for example, vulnerability assessment, penetration testing, threat intelligence, security, AI/ML security, and all this stuff, routing security that we talk about. So these are services that we conduct on behalf of our client. Okay. We have solutions. We are coming up with our first and unique solution of Smart SIM, which is capable of not only detecting the threats, but also it will be one step beyond in identifying and detecting threat before it impacts the organization. So it's a AI/ML based SIM solution which we are planning to launch in end of 2023.
along with other solutions that we have. The point and the major challenge that we as a cybersecurity firm have ever faced is the resources. Okay, when we say resources, I'm sure that when we talk about, जब हम बात करते हैं ना hacking की, तो सबको ऐसा goosebumps आते हैं कि hacking, yes, ये तो सीखने जैसी चीज है, हमें सीखना चाहिए. And you know, हमें जब मैं उस यंगस्टर वाली एरा में था, तो जब कोई सुनता था साइबर सिक्योरिटी, तो हाँ, वो दो चीजें उनके दिमाग में आती थी. पहला तो उनको लगता था सिक्योरिटी गार्ड, या फिर उन्हें लगता था यार कैन यू प्लीज हैक माय और माय फ्रेंड्स फेसबुक अकाउंट और ईमेल अकाउंट. ओके, सो यस, आई हैव सीन दोस एरा एज वेल. आई मीन दोस टाइम इट वाज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू पीपल आर हियर, बट यस, एथिकल हैकिंग आज भी वहीं तक सीमित है जहां पे आप कोर्स करते हो तो आपको लगता है कि किसी का अकाउंट हैक कर सकते हैं या स्टफ लाइक दैट. बट ट्रस्ट मी, दैट इज नॉट समथिंग व्हिच everybody yields at. Look at the statistics that is in front of you now. As per cybersecurity, Cybercrime Magazine, by 2020, which was published in 2021, by end of 2021, there was supposed to be a 3. There are 35 lakh job openings available for cybersecurity professionals, but the fact is there are not much candidates to fulfill those needs. And this requirement, which is mentioned in front of you, which is from 2021, this requirement is continuously increasing. It is not decreased yet. Okay. If we talk about only India, NASSCOM is an Indian government body which is responsible for information security, information technology, and communication. As per their survey and report, the India requires a minimum of 10 lakh cybersecurity professionals. That's a huge demand, correct? So what we are talking about, some time back, we have spoke about brilliant fields like data science, analytics and all, where we had a lot of, obviously, we have a lot of scope, but then the number of vacancies are pretty less. On the other hand, we have cybersecurity where India needs 10 lakh resources or 10 lakh cybersecurity professionals, but they are not enough to cater it. Okay. The reason why this, जो हम बात कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों की जरूरत है या 35 लाख लोगों की जरूरत है, ये अचानक से कैसे हो गया? It's because जो हमने अभी पहले वाली स्लाइड में देखा कि $16 billion डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है, और there are 1 lakh attacks which is happening on 16% of the organizations. What companies, owners and founders and CXOs basically have decided कि 16.1 billion loss लेने से अच्छा है, let's hire people who are specialized in those domains to counter these attacks and save us money, right? So 50%, 51% of the executives have now decided to hire full-fledged and full-time employees in cybersecurity. Okay, so that is one of the reasons क्यों इतना ज़्यादा hype और या इतना ज़्यादा demand क्यों है. And for statistics I can go on. The point which I'm trying to make here is, see, it is unlike the software development, digital marketing and stuff. Cybersecurity is one field where you cannot get into this field and learn. Okay, because when you get into a company, जब आपको नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप क्या करते हो? आप एक इंटर्न की तरह आप प्लेस हो सकते हैं, राइट? और फिर इंटर्न की तरह प्लेस होने के बाद यू कैन लर्न एंड build your career, which is not actually the case in terms of cyber security, because cyber security requires you to develop skills before you get into this field. जैसे अगर आपको कल को विंडोज सर्वर सिक्योर करना होगा, तो आपको विंडोज सर्वर तभी मिलेगा जब आपके पास विंडोज सर्वर की एक्सपीरियंस या कैपेबिलिटीज होंगी उसको प्रोटेक्ट करने की, राइट? अगर आपको सर्वर दे दिया गया और आपके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, यू माइट हैम्पर थिंग्स अराउंड यू, करेक्ट? सो इसी कारण से आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एथिकल हैकिंग का कोर्स करते हैं. बहुत प्लेटफॉर्म्स है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, जहाँ पे 500, 600, 1000 रुपीज के सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाते हैं. पॉइंट इज you never learn the actual skills which is required to get into this room. Okay, why? Is because most of the time when you try to learn things, जो भी ट्रेनिंग होती है वो उनसे होती है कि पॉइंट बहुत सिंपल है, 10 लाख साइबर सिक्योरिटी की जॉब प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है. अगर कोई आदमी या अगर कोई भी इंसान जिसके पास साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट है रियली, सो
ये हाईली पॉसिबल है कि उसको कहीं ना कहीं किसी कॉर्पोरेट में नौकरी मिल गई, करेक्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है। अगर किसी को नहीं मिली है और आपको ट्रेनिंग देने आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उसको किसी कॉर्पोरेट ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ओके, एंड दैट्स हाउ दे बिकेम द ट्रेनर नाउ, एंड दे आर टीचिंग यू। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आप बात करेंगे तो जिन्होंने एथिकल हैकिंग का कोर्स किया, बट दे नेवर गॉट इनटू अ प्लेसमेंट, बिकॉज अगेन एज आई सेड, इट रिक्वायर्स डेडिकेटेड एंड रिक्वायर्ड स्किल्स टू एंटर इनटू दिस डोमेन. So that is one of the reasons why Secure IT, being a services company, being a solution company, we were forced to enter into education. Okay, we are doing our certification program not by choice. We are forced to get into it because today it is very difficult to find skillful resources into cybersecurity. Okay, अभी से आप लोग तो काफी कुछ कर रहे होंगे, आई एम श्योर कि आपके सिलेबस में भी कहीं ना कहीं होगा ही, बट हैविंग सेड दैट एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज कंस्ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट. लाइक फॉर एग्जांपल, वर्चुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो वर्चुअलाइजेशन में आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा वर्चुअल बॉक्स और वर्चुअल पीसीज, हाइपरवाइजर settings, modules, technology. But the point is, we have moved far away from virtualization. Now we are talking about cloud computing, big data, Dockers, containers, Kubernetes, all those things, right? Where the entire solutioning or entire architecture is completely based on cloud technologies, Dockers, containers, and Kubernetes, correct? Now, for you to adapt these things on a very quickly manner, you require somebody who is experienced and expert in order to tell you what companies are requiring. Okay, I'll give you a very basic example. आप नेट पे जाना और सर्च करना एथिकल हैकिंग, ठीक है, और आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, और try to understand what they are teaching. Okay, now they are teaching how to hack Windows, how to create malwares, how to hack Linux systems, how to break into machine, how to erase the logs and stuff like that. These people have never understood, and me being also a cybersecurity professional, I have also done a lot of certification courses. I'm ISO 9001 certified. I'm also 20,000 certified, 27,001 certified, CEH certified, and stuff like that. So, right? But the point which I'm trying to make here is, you go to these institutions, what you will observe is they are teaching you how to hack into system. Now, just assume for a second, if I give you opportunity to work into any organization, मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है, कल आपके कॉलेज में मैं इन्फोसिस को लेके आ, ठीक है, इन्फोसिस आएगी और साइबर सिक्योरिटी को हायर कर, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दीस कंपनीज नेवर कम टू कॉलेज फॉर कैंपस सिलेक्शन. Okay, they will come, they will hire you, but the point is, what have you learned? You have learned how to hack. Will Infosys hire you to hack into Wipro or TCS? No. Infosys will hire you to protect the Infosys assets, right? उनके खुद के सर्वर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी खुद के एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हायर करेंगे. लेकिन आप बोलोगे मुझे तो सिखाया कि हाउ टू ब्रेक इनटू इट, आई डू नॉट नो हाउ टू डिफेंड इट, राइट? So that's the biggest problem which is happening in the entire training industry, specifically into cybersecurity. Okay? What we have done is, we have understood the requirement of the student, and the biggest problem again which happens is getting a quality education across the country. Okay, जैसे मुंबई में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, अब किसी भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, NIT, एप्टेक और जो भी हैं. नो ऑफेंस टू एनी इंस्टीट्यूशंस, दे आर ऑल very good in their own name and territory and domains. But won't you agree, the quality of training which happens in any of these institutions in Mumbai is far more different than any other part of India. Let's say, for example, when you talk about MP, when you talk about UP, Punjab and all those places, right? वो quality जो मुंबई में deliver होती है, वो quality कहीं और deliver कराना, it's very impossible, correct? It's because obviously institution locally type करते हैं, locally trainers लेते हैं and stuff like that. So
giving this uniform training across the country is, in terms of cybersecurity, is again one of the difficult or one of the most complicated challenges that we have. So, security, what we did is, we have taken this challenge of making these skillful youth in our own hands. We are the India's only company into cybersecurity certifications. Okay. अब आप बोलोगे वैसे तो बहुत सारी कंपनियां जो ट्रेनिंग्स दे रही हैं, so there's a very huge difference between trainings and certifications. Okay, training means, let's say for example, you sitting in Bhopal or Madhya Pradesh or Lucknow, for example, right? If you go for training, you get yourself trained and then you get a certificate of training. That certificate of training may be valid in your own territory or that specific region. So that becomes a training institute or training course. When you do a certification or training from a certification company, irrespective where you're doing it, the certificate that you get is worldwide valid. Okay, so that's a core difference between a certification company and a training company. Okay, so we are India's only certification company which is into solutions and services as well. Okay, we have our own module. We, with all our research and development, my experience of 24 years into technology as well as into business, we have came up with a unique approach of educate, enable, and employ. Okay. The reason why we do it is because we believe that we are living in an era, हम ऐसी technological झंझटों में और जंजाल में फंस चुके हैं, वेबनेट पे फंस चुके हैं, जहां पे जस्ट गेटिंग ट्रेंड इज नॉट इनफ, राइट? मतलब हमने कुछ बुक्स उठाई, हमने कुछ कोर्सेस अटेंड किए, हमने कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख लिए, इट इज नॉट इनफ बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग द सेम, राइट? हम जो भी कुछ पढ़ते हैं या हमें जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, नॉट फ्रॉम एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव, एकेडमिक जो हम पढ़ते हैं वो तो बहुत अलग चीज है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल्स, हमारी सारी लर्निंग उसी के बेसिस पे होती है। अदरवाइज जो भी हम ट्रेनिंग्स करते हैं या एडिशनल स्किल्स अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज आती है वो ये आती है कि हमें लर्निंग हो जाती है, बट इवेंचुअली जब लर्निंग खत्म होती है और वी गो फॉर इंटरव्यू, व्हाट वी फील इज कि जो कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट है हमसे या कॉर्पोरेट की एक्सपेक्टेशन है हमसे, is something which is very different than what we have been taught of. Correct? There is a very famous saying ki the actual real life situation and challenges starts once you leave your college, or when you walk out of the college gate. Correct? It's because there are a lot of competitions out there. There are a lot of challenges in terms of skills, in terms of learning, in terms of grades, in terms of there are a lot of departments in the company like HR and accounts and finance and everything. They're sitting there to evaluate and cut down the benefits that you can draw from a company. Okay, Amit, just let me know if I'm just crossing the territory in terms of timing. Okay, so I'll just wind up in a couple of minutes. Yeah, so see, the overall objective is we wanted to come up with a solution where the student gets the kind of students are on the winning edge. Okay, being a business, we are happy in our solutions and services business. Okay. The problem is, even when we have a client requirement, whenever we are going for hiring, we are not getting those talents. And the reason is, as I explained you a couple of points, कि लोगों को कॉर्पोरेट को कुछ और चाहिए और बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं। बच्चों ने पढ़ा कुछ और है और प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ टूल्स रन करने आते, they do not know how to actually work in a corporate. Okay, for example, अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहिए ईमेल आईडीज की, तो आप फिंगर टूल है उसको ओपन करेंगे और उससे लिस्ट डाउन करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द ट्रेडिशनल एंड ओल्ड वे ऑफ डूइंग इट। वो बहुत सारी नॉइज जनरेट करता है, बहुत सारे लोगों को अलर्ट करता है, आपके खिलाफ सारी चीजें होगी। देयर आर मॉडर्नाइज्ड वे एंड कॉर्पोरेट वे ऑफ डूइंग इट। ओके, so what we have done is we have created a model which is called Educate, Enable, Employ. Educate, you get a training appropriately in terms of 1 hour, 1.5 hours, because as per global statistics, average human brain is only creative for 3 to 4 hours in a day.
जब हम नौकरी भी करने जाते हैं तो सुबह के 3 घंटे 4 घंटे हम नौकरी करते हैं, उसके बाद लंच ब्रेक होता है, उसके बाद हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि 6:30 बज जाए और निकले जाए, राइट? सो दैट्स अ बायोलॉजिकल फैक्टर, नोबडी इज above and beyond it. And similarly, what we also do is we also train only to 1.5 hours every day, not more than that. Okay, so we treat you as a human. Okay, that's the basic advantage of this certification. Next is, once you complete your training, obviously there are different benefits in the educate, enable, and employ model altogether in these things. I think Amit will be able to explain more into this. Enablement means once you have learned things across yourself, the biggest problem is practical exposure, and we want to counter it. And that's how every course that we are offering under our umbrella is enabled with a pre-built internship into it. Okay, so wherever you have learned, whatever you have learned in educate model, now it's time for you to practice it and get the enablement done. So that will only happen if you know and if you work for corporates. So that is the internship part. Employ, and that's the ultimate goal, right? To get the employment. So our training programs and certification programs are complete and absolute example of getting hand-holding till your employment. Every certified candidate from Secure IT gets assured placement. Okay, yes, it's assured. I'm sure that you might have seen, or there have been decades. Your training centers have put this logo 100% job guarantee and all those stuff. So please understand, it is impossible for any training institute, be it Mumbai, be it Bhopal, be it Indore, be it Lucknow, be it Varanasi, irrespective of how big you are. You are a training center. You do not have and you cannot approach HR of the giants, like for example, Infosys, TCS, Wipro, and all this stuff, right? Irrespective how good you are. We being the domain experts, we being the social saviors for these organizations, we have reached them. That's why when we say assured placement, being a company, we can give it to you. Not those training centers who are running Python programs and have put 100% job guarantee in placement maybe 2-3 decades back and all. So this is what is what we are doing as a novel cause in terms of education. And as long as Secure IT is concerned, we are ISO 9001 certified company, headquartered in Mumbai and having operating from 10 plus locations in India. Internationally, we are accredited and affiliated with IAF and IAS. That means International Affiliation Services and International Affiliation Forum. These are two international bodies which recognize any company based on their process, based on the scope of business, based on legitimacy, trust. Once they come and do the audit of the organization, then only they give the association, and they are very renowned. And I think they are the only organizations worldwide which give the affiliation and accreditation, which can be trustworthy. So Secure IT is accredited with IAF and IAS as an accreditation forum. We have been nominated and we have been awarded as top 20 best cybersecurity companies in India, thanks to people support that we had. And we are also among top 10 cybersecurity firms, promising firms in India, as per NCN and Global News, where we have competed and reached to number 1 in competition with Capgemini and Avast and a couple of antivirus companies in terms of cybersecurity. So these are a few credentials that just to explain you what we are doing, where we are, and just to inform you that though we are into cybersecurity trainings and certification, our main goal is to provide employment. Our main goal is to get or add significant values to our students so that they can choose cybersecurity as a career path, not just from a learning standpoint, but also by understanding, by indulging themselves into the entire program altogether. So I think I have taken, I'm so sorry, I think I've extended myself a little bit. That's the issue always when I interact with the students. You have been a wonderful audience. Thank you so much for hearing me patiently. I know it takes a lot of patience to hear me out for at least 40 minutes. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.
आई विश कि जितने भी लोग अभी इस कॉल पे कनेक्ट हैं, सर को सुनने के बाद में साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी अभी, कि इसमें आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। आई विश कि आप सभी लोगों को बातें समझ में आई होगी। मैं कुछ चीज़ें और आपको एलोबरेट करता हूँ, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। हार्डली अराउंड 15 मिनट का हमारा सेशन है इसके बाद में। सो सिक्योर आईटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही सर ने आपको थोड़ा सा एलोबरेट किया है, और इंडिया की फर्स्ट और नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जो शायद बाहर नहीं अवेलेबल है अभी मार्केट। सबसे मेन चीज कि मार्केट में जितनी भी चीजें अभी अवेलेबल है, जैसा कि आलोक सर ने आप सभी लोगों को बताया है, इसमें कई बार चैलेंज ये आता है जब हम सर्च करते हैं इससे रिलेटेड, तो पर्टिकुलर हमें चीजें नहीं मिल पाती। और अल्टीमेटली जो गोल है किसी भी स्टूडेंट का, आइदर इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट है, आइदर वो बीसीए एमसीए स्टूडेंट है, पर्टिकुलर एक गोल होता है कि या तो वो अच्छी कंपनी में प्लेस हो या फिर उसका पैकेज काफी अच्छा होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी आज की डेट में वही इंडस्ट्री है जिसमें इफ अगर कोई पर्सन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉपर मैनर में कुछ चीज करता है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है अपने करियर में। बहुत सारे चैलेंजेस थे। सिक्योर आईटी बिकॉज एक नोन ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप 20 ऑर्गेनाइजेशंस में आती है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। सो हमने हमारे कुछ सॉल्यूशंस बनाए हुए हैं। ये सॉल्यूशंस उन सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो अपने करियर में या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या तो वो चाहते हैं कि उनका करियर आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में एक प्रॉपर मैनर में ग्रो करे। तो कुछ सॉल्यूशंस हैं, उसके बारे में मैं एक बार आपको एलोबरेट कर देता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम है, इट्स अ वॉरियर प्रोग्राम। हमने इस प्रोग्राम का नाम वॉरियर प्रोग्राम दिया है। वॉरियर प्रोग्राम, वॉरियर। प्रिया कैन यू प्लीज म्यूट? प्रिया कैन यू प्लीज म्यूट? ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, इट्स अ वॉरियर प्रोग्राम। वॉरियर हिंदी में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो वॉरियर वो पर्सन होता है जिसे हम योद्धा कहते हैं, राइट, जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है। इफ अगर आप वॉरियर प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं, सो इट्स अ सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग इंजीनियर, राइट। इसमें इनिशियली जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, 30 डेज का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसमें आपको अटेंड करने का चांस मिलता है। डेली बेसिस पे 90 मिनट की क्लास होती है, आइदर मॉर्निंग आइदर इवनिंग उसका टाइमिंग हो सकता है। डेली बेसिस पे जब आप 90 मिनट की क्लास अटेंड करते हैं तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने के लिए छोटे छोटे आपको टास्क दिए जाते हैं जिससे हम असाइनमेंट बोल सकते हैं। आप इन असाइनमेंट्स को कॉलेज असाइनमेंट से कंपेयर मत कीजिएगा। ये टास्क हैं जो टास्क आपको प्रैक्टिकली जो भी चीजें आपको डेली बेसिस पे सिखाई जा रही हैं, ताकि आपको याद रहे वो चीजें आपको डेली क्या सिखाया है, तो डेली बेसिस पर आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। 1 मंथ का ट्रेनिंग ओवर होने के बाद में 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है इसी के साथ। 30 डेज का ट्रेनिंग ओवर होने के बाद में 90 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इट मींस ये टोटल 4 मंथ में वॉरियर प्रोग्राम कंप्लीट होता है। जब ये वॉरियर प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, सो आपका एक सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन में इफ अगर आप 80 से लेकर 94% अचीव करते हैं, बिकॉज 4 मंथ आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली इसमें सिखाई गई है, 4 मंथ हर एक चीज आपको बताई जाती है इसमें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए सर्टिफिकेशन में। इफ अगर 80 से लेकर 94% आप सर्टिफिकेशन में अचीव करते हैं, सो सिक्योर आईटी की तरफ से आपको 4 इंटरव्यूज हम कंडक्ट करवाते हैं और उसमें किसी ना किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। बट कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है कि सर इफ अगर इंटरव्यू ना देना पड़े और डायरेक्टली ही सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है? यस, उसमें भी सॉल्यूशन है। कुछ स्टूडेंट्स जो ज्यादा अच्छे से मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं और 4 मंथ प्रोग्राम को बहुत अच्छे से वो अटेंड करते हैं और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 95% से ऊपर अगर वो अचीव करते हैं तो उन्हें कोई भी इंटरव्यू नहीं देना होता है हमारे साइड से।
उनका डायरेक्टली ऑफर लेटर उनके हाथ में आता है विदाउट एनी इंटरव्यू, बिकॉज वो सारी चीजें जो आप किसी कंपनी में जाकर करने वाले हैं वो प्रैक्टिकल हम आपको पहले ही सिखा रहे हैं। सो उन कंपनी का ट्रस्ट सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा है कि हमने आपको पहले ही चीजें सिखाई हुई है। और कोई भी स्टूडेंट जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में 95% अचीव कर रहा है, इट मीन्स वो 4 मंथ में इस फील्ड का मास्टर हो चुका होता है। अब एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर मैं 80% अचीव नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि सर आपने 94% वाले के लिए बता दिया है, 95% वाले बच्चों के लिए भी बता दिया है, बट 80 से नीचे अगर मेरे परसेंट आते हैं तो फिर क्या मुझे जॉब नहीं लगेगी? तो आंसर है नो, जॉब लगेगी। तब भी आपको जॉब के असेसमेंट है, बट उसमें कुछ कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है। उसमें कंडीशन ये है कि 1 साल तक इफ अगर आपके 80% से नीचे आते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में, सो सिक्योरिटी की तरफ से नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको कंप्लीट जॉब का असिस्टेंस मिलता है। बट जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए फिर एडिशनल आपको फी पे करनी पड़ती है, बिकॉज कंपनीज की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो एडिशनल फीस उसमें लगती है 5500 रुपीज इफ अगर आपके 80% से नीचे आते हैं। कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में और बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से जब वो स्टार्ट करता है तो एवरेज जो पैकेज उसका लगता है इसमें वो 3 से 3.6 का होता है। इफ अगर आपने बहुत अच्छे से और चीजें अडॉप्ट की हैं तो ये पैकेज 4.5 5 तक भी जा सकता है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिससे हमने वॉरियर प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है। कई बार स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन और आता है कि सर मैं चाहता हूं कि इनिशियल लेवल से ही जब मैंने मेरा कॉलेज में पास करूं तो इनिशियली ही मेरा पैकेज अच्छा लगना चाहिए, मतलब 3.6 4.5 से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं चाहता हूं सर मेरा पैकेज ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इट्स अ कैप्टन प्रोग्राम। कैप्टन प्रोग्राम में टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी अलग है। कैप्टन प्रोग्राम में इनिशियली जैसे आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं सो इट्स अ 90 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। वॉरियर प्रोग्राम में आपने देखा होगा वो 30 डेज का ट्रेनिंग था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड जो कैप्टन प्रोग्राम है ये 90 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। डेली बेसिस पर 90 मिनट की क्लास लगना है, प्रैक्टिकल सारी चीजें उसमें सिखाई जाती हैं। और 90 डेज का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में 2 मंथ का इसमें इंटर्नशिप है। इट मीन्स ये जो पूरा प्रोग्राम है ये 5 मंथ प्रोग्राम। इसमें पूरे आपके स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाता है और इसके सर्टिफिकेशन में जस्ट 60% से ऊपर आपको लेकर आना होता है। 60% बहुत ईजी है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके 60 से नीचे आए अलग अलग कॉलेजेस। सो 60% लेकर आना है, लगभग सभी स्टूडेंट्स के 60% से ऊपर आ जाते हैं। और सबसे मेन चीज कैप्टन प्रोग्राम की यह है कि कैप्टन प्रोग्राम से जब आप यहाँ से पास करते हैं, सर्टिफिकेशन को क्लियर करते हैं, सो आपको किसी भी टाइप का कोई भी इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन नहीं करना होता है, डायरेक्टली इसमें प्लेसमेंट रहता है। इंडिया की जितनी भी टॉप कंपनीज के आप नाम सुनते हैं उनमें से किसी ना किसी कंपनी के अंदर। आइदर डोमेन आपको सिलेक्ट करना है, आप बैंकिंग सेक्टर का डोमेन सिलेक्ट करते हैं, बैंकिंग में भी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आप एफएमसीजी की कंपनियां सिलेक्ट करना चाहते हैं, आइदर आप आईटी की कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं। जो डोमेन आप सिलेक्ट करते हैं उस हिसाब से सिक्योर आईटी में आपका अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट यहाँ से ऑफर होता है। जैसे ही ये प्रोग्राम ओवर होता है, इस प्रोग्राम के ओवर होने के बाद में विदाउट एनी इंटरव्यू डायरेक्ट प्लेसमेंट अवेलेबिलिटी है इसमें। मैं दोनों में एक बार दोबारा से डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कैप्टन प्रोग्राम में 30 डेज का ट्रेनिंग है, सॉरी वॉरियर प्रोग्राम में 30 डेज का ट्रेनिंग है, कैप्टन प्रोग्राम में 90 डेज का ट्रेनिंग। दोनों ही प्रोग्राम में 90 मिनट की क्लास अवेलेबल है, डेली बेसिस पे क्लास होती है, एवरीडे असाइनमेंट होता है। वॉरियर प्रोग्राम में 3 मंथ का इंटर्नशिप है और वो टोटल 4 मंथ का प्रोग्राम हो जाता है वॉरियर प्रोग्राम। एंड द कैप्टन प्रोग्राम में 90 डेज स्किल सेट के साथ में 60 डेज का इंटर्नशिप है। टोटल जो प्रोग्राम है ये 5 मंथ का प्रोग्राम। बट इन कैप्टन प्रोग्राम जो ऑन एन एवरेज पैकेज लगता है कैप्टन प्रोग्राम से पास आउट करने के बाद में, सर्टिफिकेशन के बाद में, वो 4.5 मिनिमम है, मैक्सिमम वो 7 8 9 10 तक भी जा सकता है। एज अ फ्रेशर, आप फ्रेशर हैं तब भी आपका जो पैकेज जाता है वो मिनिमम 4.5 मैक्सिमम 7 7.8 इससे ऊपर भी जाता है। अभी तक जो हमारा एवरेज चल रहा है वो इतना ही चल रहा है। सो वॉरियर प्रोग्राम में इफ अगर आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो ऑन एन एवरेज 3 to 3.6, इफ कैप्टन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करते हैं तो 4.5 7.5 इट्स एवरेज पैकेज। कई सारी टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, बट
आलोक सर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी टेस्टिमोनियल की कोई भी रिक्वायरमेंट है इसमें। सो यहाँ तक आई विश कि बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। कई सारे क्वेश्चन होते हैं जब हम किसी भी वेबिनार को अटेंड करते हैं, सो एक बार में चीजें क्लियर नहीं हो पाती। जैसे अभी कई सारे लोगों ने अपने चीजें नोट की होगी, आपने अपनी कॉपी में आपने बहुत सारी चीजें अभी आप नोट कर रहे होंगे, और मन में बहुत सारे डाउट भी होते हैं कि सर क्या है, कैसे होगी चीजें, या फिर आपके जो गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स, उससे ही कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर मैं इसमें जो चाहता हूँ क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो मैं चैट पे एक गूगल फॉर्म आप सभी लोगों को सेंड कर रहा हूँ। उस गूगल फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, उन बेसिक डिटेल्स को आपने फिल करना है। हमारे साइड से 1-on-1 आपके पास में कॉल आएगा और आपसे काउंटर क्वेश्चन भी हम पूछेंगे। काउंटर क्वेश्चन इट मींस इस वेबिनार में आपको कितनी % चीजें समझ में आई, राइट। और ऐसे वो लोग आप में से जितने भी टॉप 5 ऐसे लोग रहेंगे जो उन क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपरली हमें करते हैं। तो आइदर वॉरियर प्रोग्राम, आइदर कैप्टन प्रोग्राम, आप जिस भी प्रोग्राम में हमारे साथ पार्टिसिपेशन करेंगे उसमें आपके लिए कुछ हमारे साइड से सरप्राइज रहेगा। बिकॉज ये वेबिनार आप सभी लोगों के लिए कंडक्ट हुआ है, और ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने सिंसियरिटी के साथ में इसको अटेंड किया है उनके लिए कुछ सरप्राइज तो होना ही चाहिए, राइट। आई विश कि आज आपको बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई है। मैं आपके साथ में जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे बताइएगा अगर आपको रिसीव हो गया है तो। ये गूगल फॉर्म है, अभी हम इस कॉल पे ही हैं, इस कॉल पे रहते हुए आप इसको प्लीज फिल कीजिएगा ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि प्रॉपरली फिल हुआ है या नहीं हुआ है फॉर्म, राइट। जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने चैट पे आप सभी के साथ में एक कॉमन गूगल फॉर्म सेंड कर दिया है। प्लीज इसको एक बार फिल कर दीजिए ताकि जो भी आपकी चीजें हैं, इसमें मैंने 1-2 चीजें ऐड करी है। अपना फ्यूचर टारगेट और आपकी एक्सपेक्टेशन एज अ फ्रेशर कितना है कि इतना मेरा पैकेज होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली एक स्टूडेंट का टारगेट यही है कि पास आउट होने के बाद में उसको करियर में स्ट्रगल ना करना पड़े, राइट। आई थिंक आप में से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मुझे पास आउट होने के बाद में भी स्ट्रगल करना पड़े। हर एक पर्सन ये चाहता है, इवन कॉलेज भी यही चाहता है। इन 2011 में मेरा एडमिशन हुआ था SIRT कॉलेज में, एंड मैं आप सभी लोगों को लकी मानता हूँ बिकॉज भोपाल में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसे लिमिटेड कॉलेज ही हैं जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हैं खुद से। बिकॉज इससे पहले मैं बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में भी सेमिनार वेबिनार ले चुका हूँ। मेजरली चैलेंज ये आता है कि ज्यादातर कॉलेज ये सोचते हैं कि अब स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, अब ये पास आउट हो जाएगा और ये देखेगा इसको जो भी करना है। लेकिन बट सेज यूनिवर्सिटी के साथ में सबसे प्लस पॉइंट यही है कि जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो जितने चिंतित आप अपने करियर को लेकर रहते हैं उतने ही चिंतित हमारे जो आप सभी लोग को पता है हमारे जो चेयरमैन सर हैं संजीव अग्रवाल सर, वो भी उतना ही चिंतित रहते हैं। बिकॉज मैं उनसे मिल भी चुका हूँ 1-2 बार पर्सनली, एंड हमेशा कंसर्न वही रहता है कि हमें हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं कैसे ना कैसे करके इनको करियर में ग्रोथ करवानी। सो आप सभी बहुत लकी हैं कि आप एक अच्छे कॉलेज का पार्ट हैं। रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी एक्टिविटीज कॉलेज करवाते रहता है आपके डेवलपमेंट के लिए। अभी जब थोड़े दिन पहले मेरी अंजना मैम से बात हुई थी, सो उन्होंने भी यही कहा था कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ करके स्टूडेंट के लिए बेस्ट करना है। सो आई विश, एक फॉर्म मैंने भेजा है, जिन लोगों ने भी इसको फिल कर दिया है प्लीज आप इस पे मार्क कर दीजिएगा, हैंड रेज कर दीजिएगा या ऐसा कुछ, तो मुझे पता चल जाएगा आपने इसको फिल कर दिया है। So Amit, यस shall we finish this? यस मैम। Yes, I want to give you thank you all Alok sir and Amit for your valuable knowledge, for your valuable advice, and you have given your precious time also. And thank you sir once again from behalf of the SIRT Excellence College. And I'm sharing a small token certificate of appreciation to you both. And Amit, मैं आपको बाद में भेज दूंगी। एंड सर बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन बच्चों को आई थिंक कोडिंग पसंद नहीं है, हालांकि CS डिपार्टमेंट है ये,
तो शायद उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में आई थिंक बहुत ज्यादा कोडिंग, C++, जावा इससे पाला नहीं पड़ता है, और उनको बहुत अच्छा एक हैकिंग का शौक लड़कों को, मेरे को ऐसा लगता है खास तौर से बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा ये सर। एक्सक्यूज मी सर, Thank you, ma'am. Yes. Thank you for your time. यस and- वरुणा, सर वो गूगल फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं यू नीड परमिशन फ्रॉम ओनर। Just a minute. Just a minute. and any query related with the cyber security or this session, please ask, anyone can ask. Just wait for 1 minute to all. Just give me 1 minute. हेलो ज्योति, मैं 10 मिनट में लगा रही हूँ, 10 मिनट। सर आई एम शेयरिंग सर्टिफिकेट एंड मैंने लिंक कॉपी भी कर ली है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें आप बाद में भी शेयर कर सकते हो लिंक, और मैं सबको भेज दूंगी इफ यदि अभी Yes. नहीं है ना, ट्राई इट। So thank you, Anjana ma'am. Thank you for your kind coordination and support for making it possible. इट्स माय प्लेजर सर। And as you know, as Amit was explaining, what we are, our objective is, and I think आप हमारे seriousness को इस तरह से मान सकते हैं कि we are the only company in India or across the globe जहाँ पे जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है, जी सर। कंपनी रिलीजेस द ऑफर लेटर। ओके, ओके, सो ये तो अश्योरिटी है कि स्टूडेंट को प्लेसमेंट लगनी ही लगनी है अगर वो डेडिकेटेड और सिंसियर है तो, क्योंकि रिलीजिंग एन ऑफर लेटर इज समथिंग व्हिच इज अ कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, राइट। दूसरी चीज ये है कि जिससे कैप्टन की बात कर रहे थे, कैप्टन सर्टिफिकेशन में ये है कि अगर हमने 1 साल के अंदर आपको वैकेंसी या जॉब रिप्लेसमेंट नहीं कराई, so student gets the refund, because as I said, we are doing really good in our services and solutions. We do not want student to waste either their time or money. Okay, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए जो इस चीज को लेके सीरियस हैं या इस चीज को लेके उनको they're somehow convinced कि they want to get into this field. Lastly, as you said कि cyber security is majorly the boy stuff, but having said that, you know, जैसे होता है ना कि and obviously we have something called as process trainings. Okay, so जो हमारा कैप्टन प्रोग्राम है, it is more about mix of technical and process. Okay, so जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में प्रोसेस ऑडिट जो होती है, जिसको हम SMS कहते हैं, ISO 27001 की जो ऑडिट होती है साइबर सिक्योरिटी की, वहां पे देयर आर लॉट ऑफ एंगेजमेंट फ्रॉम गर्ल्स बेसिकली, क्योंकि ऑडिट्स वो होता है जहाँ पे गर्ल्स हैव दैट यू नो द सिक्स्थ सेंस मोर स्ट्रॉन्गर देन बॉयज, जहाँ पे उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे गलती होगी जरूर, और वहां जाके वो पकड़ते हैं उसे। सो इट इज एक्चुअली क्राफ्टेड इन अ मैनर वेयर we don't do any discrimination with the people. Everybody and anybody can join this program. yes sir, anyone query, anyone having any query, please ask, otherwise we will end the session. And the certificate I am sharing sir for appreciation. Actually, I have a doubt. Yes, ask. Sir, so as you said just now, sir, Wipros and all, they hire engineers and that for protecting the data assets. Now, let's see that now in today's, we are surrounded by Facebook, Instagram, and social media apps. They are actually taking our data for UI perspectives and all. But just like we have recently heard that Truecaller is breaching the data and selling it on dark web. So what are our views that how can we secure assets from that? Because we are using it as a security purpose. Like we know na ki if we are registering a number on Truecaller, we will know about the spam calls or the fraud. Anjana ma'am, please stop the screen sharing from your side. Yes. Okay. Yes, you can continue. Please Abhishek, go on, please.
So that was only I was asking. Okay, got it. Fantastic. So this is a wonderful question. So there are two aspects of cybersecurity. Abhishek, is it right? Aditya. Aditya, sorry. Great. So Aditya, see, there are two things. One is, so I'll give you example. Okay, it might take a couple of minutes. World War I, we have seen World War I as a mechanism of bullets, tanks, aircrafts, and all that stuff. World War II, we have seen same thing where soldiers were involved and ballistics were involved. World War III, though it is not declared as World War III, but if you consider Corona, it was nothing but a World War III using biological weapon, right? So we call them as a biological warfare, where the collective deaths which have happened is more than if you combine deaths in World War I and World War II, correct? Now, where we are moving towards is something called as cyber warfare. Okay. Yes. Take a classic example. I'll give you example. October 2020, Mumbai was completely blacked out for 2 hours. Okay. Yeah. There was no power in entire Mumbai for 2 hours. With all RCA, which we call them as root cause analysis, when RCA was done, we found that there have been Chinese malware which was implanted in the grid since 2017. Okay. 2017 में वो malware वहां पे इन्फेक्ट कर चुका था. 2019 तक उस malware ने कुछ नहीं किया. 2020 में हैकर्स को लगा कि यार क्या फालतू है, हमारा वायरस इतने साल से पड़ा हुआ है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, कोई निकाल नहीं रहा, लेट्स शो द मसल पावर. ओके, उन्होंने उस malware को एक्टिवेट किया जिसको हम जीरो डे अटैक कहते हैं. ओके, इट्स द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अटैक टू डिफेंड अगेंस्ट, क्योंकि पता नहीं चलता कि malware आया हुआ है जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं होता. 2 घंटे बाद वो अटैक स्टॉप कैसे हुआ पता आपको? नहीं, No, I'm not that familiar with that. हमने किया नहीं. Those hackers itself stopped it. Okay. So they said नहीं मसल पावर दिखाना था, हमने दिखा दिया. Now let's stop it. The virus was so powerful that it have melted the SCADA system itself. The grid meltdown would have happened, causing months of blackout. Okay. This is what is a classic example of cyber warfare. Okay. What you just mentioned about something called as personal security. Okay. Yeah. Like I'll give you a classic example. Open your Android app, Twitter, WhatsApp, whatever it is. You'll find an option which says keep track the app's activity. Okay. This activity or this option of the application keeps track of आपने कौन सा पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, सारी एक्टिविटी ट्रैक करता है. Why Facebook requires that? Just to give you ads and understand your buying habits. Okay, so there is something called as adwares, advertisement ware, which is again a category of एक यूजर के बिहेवियर को एनालाइज करके उसके एक्सपेंसेस को एनालाइज करके आप देखोगे जब आप अमेजन पे 5,000 रुपए के शॉपिंग करते हो ऑन एन एवरेज, तो आपको जो जूतों की रिकमेंडेशन आती है ना, वो स्टिच लुइस की आती है या फिर मैडम की आती है या उस तरह की आती है. आप कभी देखोगे नहीं 300-400 रुपए के जूतों की आपको कैटेगरी आएगी. It's all it's a business which has been made out of cybercrime. Okay, so cybercrime is no more restricted to एक individual को hack करना stuff. It has now been organized to raise up to cyber warfare. Okay, in the entire course that we tell you, obviously we said कि we will tell you how to defend against. But point is, it takes a thief to catch a thief. Okay, अगर आपको पुलिस वाला बनना है और इफेक्टिव पुलिस वाला बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि चोर चोरी कैसे करता है, राइट? तो आप दरवाजे पे खड़े रहोगे, चोर खिड़की से घुस जाएगा और चोरी करके चला भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? So it is important to have both these skills. We call it as defensive and offensive skills. So we teach offensive skills on how hackers will hack. We teach you defensive skills, how to protect it. Okay. Sir, as you stated about cyber warfare, I recently read about an incident about that Ukrainian state nuclear power plant website was hacked. See, hacking nuclear power plant is something which is kind of easy, I would say, because it is not connected to the internet mostly. I think it was a DDoS attack. Okay. Nuclear plant is never connected to internet. You have to hack into the physical infrastructure. No, their website was there actually.
The nuclear plant's website, official government. Right. So see, website hacking is like 5 minutes job. Okay. Hmm. Don't worry about it. I'm talking about hacking the nuclear power plant itself. Okay. Yeah. So what you need is there are specialized RFID devices which comes in 1.5 lakhs. You buy it and you can easily get into any infrastructure that you wish to. Hmm. Okay. Thank you, sir. No problem. So Okay. Abhishek, I think आपका question clear हुआ होगा. Aditya, And आदित्य, sorry, आदित्य. And मैंने आप सभी को एक फॉर्म शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे. Now Yes, it is open. it is opening. Yes. तो आप सभी लोग उस फॉर्म को एक बार फिल कर दीजिए. Then Okay. आपके जितने चीजें और भी क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज ऑन ग्रुप सेशन कई सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है. सो इफ अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उसमें क्लियर भी कर पाएंगे जो भी है. और मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आज इस सेशन में आलोक सर ने जितनी भी डिटेल्स आपको बताई है, जो चीजें मैंने आपको थोड़ी सी बताई है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे ऑन कॉल, जब भी आपके पास में कॉल आता है हमारे साइड से. और जितने भी लोग 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे उनके लिए कुछ सरप्राइज है. ठीक है. सो जो भी आपने नोट डाउन किया है एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा दोबारा से सारी चीजें. देन जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं, वेरी सून वी विल क्लियर ऑल द क्वेश्चंस ऑन वन. ओके. एंड Okay. यस. Now